Good afternoon. We'll be solving a few questions on polynomials. Okay? And since you people had said you had some issues with polynomials, let us start. Alright. This is your first question. Now you have been given fx, right? Fx has been given, and what you have to do is you have to verify if it is divisible by gx, and then you have to find out कि remainder क्या है. हो जाएगा? Try to find out. I had already mentioned some steps last time. Is that first इसका zero निकालो, right? Equate gx to 0 and find the value of x. Whatever value of x that you get, use it in this expression. x की जगह उस value को use करो. And once you do that, you will have a number that is remaining सारे चीजों को add subtract करने के बाद, and that is the remainder. Okay. अमृत का आंसर आ चुका है. Rest of you, please solve fast. Let me solve it so that you can know how it is solved. First step is to equate gx to 0, right? So that involves x plus 4 equals to 0. That means x equals to minus 4. So you got x equals to minus 4, right? And that value you will use with fx. How? You do fx equals to minus 4 to the power of 3 plus 4 into 4 to the power of 2 minus 3 into minus 4 प्लस 10. इसको सॉल्व करने का ट्राई करो. minus 64 plus 64 plus 12 plus 10. कितना आ रहा है आंसर पता करो. That is minus 64 and plus 64 plus minus है, so they give you a 0, and 10 plus 12 is 22. That means 0 plus 22 is equals to 22. That is the answer. So क्या हो गया? Everybody understood? Good. So let us try another question like that. So this is the next question. Try solving. Fx equals to 2x to the power of 4 minus 6x to the power of 3 plus 2x square minus x plus 2, and gx equals to x plus 2. So verify if it is divisible by gx. Let us solve it. If we equate gx to 0, so we get x equals to minus 2. Keep in mind this
sign minus is very important. In this case, when a number has an odd power especially, or when a variable has an odd power and you're going to replace a number inside it, कोई भी साइन हो उसका प्लस हो या माइनस, that becomes very important. So if we have the expression fx, so उसको हम सॉल्व करते हैं 2x to the power 4 की जगह 2 into minus 2 to the power 4 minus 6 into minus 2 to the power of 3 plus 2 into minus 2 to the power of 2 minus minus 2 plus 2. अब इसको सॉल्व करो. 32 minus minus 48 plus 8 plus 2 plus 2. 32 plus 48 plus 8 plus 2 plus 2. कितना आ रहा है आंसर? हाउ मच आर यू गेटिंग? 92, राइट? चेक एवरीवन, हर किसी का 92 आया है? I hope everybody has gotten 92. Okay, so if you have gotten 92, let us move on to the next question. And if you haven't gotten 92, क्लास के बाद दोबारा से इसको सॉल्व करना बैठ के, राइट? कहीं ना कहीं छोटी मोटी प्लस माइनस की ही एरर रही होगी एंड सॉल्यूशन तुम्हारे सामने भी लिखा है, ठीक है? This is the next question. Some of you might find this question to be interesting. Try solving. Essentially same question है, ठीक है? This is a similar patterned question, but थोड़ा सा अप्रोच में चेंज है. सॉल्व करो, try it. Okay, so let us see how this question is solved, right? This expression that you have, this is gx. gx का वैल्यू है x minus 2. अगर gx को 0 से इक्वेट करोगे, x आएगा 2. तो x का वैल्यू तुम्हें पता चल गया, यहाँ पे क्या लेना है? 2 लेना है, ठीक है? अब x का वैल्यू 2 लेने के बाद तुम्हें क्या करना है? 2 को डालना है कहाँ पे? fx में. यहाँ पे fx के दो वैल्यू हो सकते हैं, 2x क्यूब माइनस 5x प्लस ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 13. सो इनको मान लेते हैं, एक को मान लेते हैं fx1 पहले वाले को, और दूसरे वाले को fx2, ठीक है? fx1 एंड fx2, इनकी वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है? fx1 की वैल्यूज क्या है? वो है ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 13. x की जगह हम डालेंगे 2, दैट मीन्स 8a प्लस 12 माइनस 13. ये आ गया fx1, ठीक है? लेट अस फाइंड fx2. fx2 कैसे निकलेगा? 2x क्यूब माइनस 5x
प्लस ए। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे क्या होगा? 2 × 8 16 माइनस 5 × 2 10 प्लस ए। ठीक है, सो what you people obtained is fx1 एंड fx2 इन दोनों का रिमाइंडर। ये एक्चुअली fx1 fx2 नहीं है, ये fx1 और fx2 का रिमाइंडर है आफ्टर बीइंग डिवाइडेड बाय gx। ठीक है, एंड what it has mentioned is that if the polynomials ax cube plus 3x square minus 13 and 2x cube minus 5x plus a when divided by x minus 2 leave the same remainders, find the value of a। so दोनों का रिमाइंडर सेम है, राइट? सो तुम्हें कंडीशन ये दिया है कि जो ये तुम दो रिमाइंडर्स देख रहे हो, ये और ये, इन लोग का वैल्यू इक्वल है। ठीक है, सो हम उसको इक्वेट कर दें। कैसे करेंगे इक्वेट? उसका मतलब है ये ऐसे, these two terms are equal। अब कोई से सॉल्व कर सकता है? ए को एक साइड ले आओ, 8a माइनस ए इक्वल्स टू 16 माइनस 10 माइनस 12 प्लस 13। प्लस 12 है, जब प्लस 12 राइट साइड को आता है, यानी कि लेफ्ट साइड से प्लस 12 हम कैसे एलिमिनेट करेंगे? वी विल लेफ्ट साइड से 12 को हटाना है। लेफ्ट साइड से जब 12 को हम हटाते हैं तो यहाँ पे -12 और यहाँ पे भी -12, राइट? सो ये -12 प्लस 12 0 हो जाता है। So now you people know that 8a minus a equals to 16 minus 10 minus 12 plus 13. That means 7a equals to how much? First, batao. Any of you can tell the answer. Tell, right? 16 plus 13 is 28. Sorry, 29. And 29 minus 22 is 7. That means a equals to 1. So now that this question is done, we will solve another question of the same type. So this is another question. If the polynomials 2x cube plus, ये क्वेश्चन हमने अभी किया क्या? Did we solve this question right now? So ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही सिमिलर हो गए, इतने सिमिलर कि I thought we will solve this question. Anyways, so solve this question right now. Start solving. You know fx, fx1, fx2, यहाँ पे fx के दो वैल्यू है, gx का वैल्यू दिया गया है, एक्सप्रेशन, एंड a का वैल्यू निकालना है. We have to find out the value of a. Start solving. I'll solve and you people can check with your copies and verify if your answers are going in the right direction. So you have been given what? तुमको दे दिया गया है gx, fx1 and
fx2। ठीक है, so you can take the values such that x equals to 2, ये सबका निकल जाएगा, x equals to 2। तो रिमाइंडर ऑफ x1 यानी कि रिमाइंडर ऑफ fx1 क्या होगा, 2 इंटू 2 क्यूब प्लस a इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 -5। Remainder of fx2 is 2 to the power 3 minus 2 to the power 2 plus 2 to the power 2 minus 4x, right? And x का वैल्यू 2 था, so 4x का मतलब 8, right? Now we have to equate both of these. Now remainder of second expression is what, 8 plus 4 minus 8. So now we have to equate, right, the second remainder to the first remainder. 8 plus 4 minus 8 plus a, that means 8 8 cancelled, 4 plus a, so this means we have got 4 plus a, and remainder of x1 का वैल्यू क्या है, 2 into 8 16 plus 4a plus 6 minus 5, 22 minus 5 is 17, so 17 plus 4a. Now have you people got the same results for the remainders of expression 1 and 2? Now the next part is इन दोनों को equate करना है, 17 plus 4a equals to 4 plus a, that means 13 equals to minus 3a, no sorry, plus 3a, क्या हुआ है, minus 3a, minus 3 सही था. Now you can find out a का वैल्यू, that is equal to 13 by minus 3. So solved. Everybody is getting the same answer. Now try this question and comment your answers. We'll meet in the next class.